हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आज है 20 नवंबर 2023। ठीक है, नवंबर 20th 2023 एंड आई एम बैक विद अनदर सिंटिलेटिंग सेशन फॉर यू। आज है दिन मंडे। ठीक है, मंडे। यस्टरडे वॉज संडे एंड उसकी तो बात करूंगा क्या हुआ संडे को, बट लेट मी सी योर मैसेजेस, लेट मी सी सम वेरी गुड मैसेजेस। आई एम वेरी प्राउड of my mentees. I'm really proud. जो positivity that I see now. पहले there would still be few handles and some people, but now I see the kind of positivity, the kind of eagerness to learn, and this is visible even in our Telegram group. Very very positive people. So I'm very proud of you. So we start with Aryan Yadav, then Vaishnavi Pathak. Then we have Saket Prasad, Pallav Jha. He's come from Amsterdam. He's in Amsterdam. आपको पता, he qualified for NDA but could not join. So he's talking of his. Let me see. Yeah, here. Sir came from Amsterdam, celebrated Chhath, and now again living for Amsterdam today. Meanwhile, Indian Express newspaper in hand with my favorite book, Power of Subconscious Mind. Excellent. हमेशा wherever you are traveling must have a book. मेरे बैग में हमेशा किताब रहती थी, हमेशा. wherever I have traveled by bus, by flight, by train, I always had 2 books with me. Always किताब जरूर होती थी. रवि गुप्ता, आशीष पुरोहित, मंजू शर्मा. Hello sir and all YMA knowledge warriors should hold perfectly still because there will be a shower of genuine knowledge in this session. Don't bring any umbrella but be equipped with their enclosures. Thank you मंजू. कल मंजू ने बहुत बढ़िया फोल्डर बनाए. कल मैंने जिक्र किया था कि द आर्टिकल्स आई एम सेंडिंग टू यू आर ग्रेट सोर्स, दे आर ट्रेजर. वो ट्रेजर हैं. जैसे लोग सोना छुपाते हैं या अपनी ज्वेलरी को रखते हैं, पैसे को रखते हैं, यार कहीं गुम ना हो जाए. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर दिस थिंग ऑन द आर्टिकल्स आई एम सेंडिंग यू. तो मंजू इज एक्स स्टूडेंट ऑफ BOCC. शी सेंट मी द फोल्डर्स एंड वी चैटेड फॉर गुड 10-15 मिनट्स. फिर मैंने उसके फोल्डर शॉर्ट किए, उसको आइडियाज दिए. दिस इज द पावर ऑफ कनेक्टिविटी. सो टुडे आई विल शेयर मंजू ने जो फोल्डर बनाए हैं फाइनली. व्हाट ऑल फोल्डर्स डू यू नीड ऑन योर फोन और ऑन योर मोबाइल वेयर यू कैन पुट दिस आर्टिकल सो दे आर एक्सेसिबल टू यू. ऐसे डिलीट हो जाएंगे और फिर आप इधर उधर घूम जाओगे और फिर जब पहुंचोगे कहीं इंटरव्यू में, आपके जो है तोते उड़ रहे होंगे, कहीं यार ये पढ़ा तो था कहीं लेकिन सर ध्यान नहीं है. सो डू दैट. थैंक यू मंजू. Priya Pal, Pallav Jha. The only thing I like about Europe, not the only thing, there are many things to like about Europe, is their work culture and everyone focuses on being mentally fit. And for that reason, every boss forces their juniors to go home for holidays and in festivals. हमारे यहाँ उल्टा है. हमारे यहाँ छुट्टी मांग लो, क्या करेगा? बैचलर है अभी, घर जाने की क्या जरूरत है, और काम करो. But Europe में, he says that the bosses are very keen that their juniors go on holidays. They go to the families to celebrate festivals. There are many things good about. I have traveled extensively in Europe. I have traveled in America. I have traveled in Africa. So, काफी other than Japan, China, this side I have not gone. Russia, but this part I have traveled. So there are many things that we can learn from their work culture, their ethics, and their morality. Vimal Patel, Anjali Sahu, Billy Fang, Ashish Purohit. Yesterday there were at least 20 crore Indians watching the cricket match. Wasting time for a match, absolute crime. I don't know 20 crores. इतना तो नहीं होगा. इतना कहाँ फुर्सत है हमारे देश में लोगों को. ये हम लोग हैं जिनके पास टीवी है या फोन में. I think somewhere it was showing that on the Star Sports or somewhere 5.4 crore was the rating they got. That many people were watching. 20 crore तो कोई मतलब ही नहीं है. 20 crore Indians will be watching a match of cricket full day. But when I posted in the group, don't waste. So there were some who are hyper this thing. No sir, if we don't support our team, who will? As though they're going to war. It was appearing, had India won, the war cries, the chanting would have made us deaf. I'm telling you. ये hyper कहाँ से आ गए आप लोग? Whose job? It is BCCI team. Who has told you that it's your job to support this team? Other who else will? अरे वो तो I was surprised. This is the kind of comments. So they were saying कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो भाई मैच देखेंगे with family and ऐसे भी मैसेज आए सर
we are watching match with family and friends. So I try to send a lot of articles to inside them, छोड़ दो यार, ये कुछ नहीं होना इस मैच का, you will regret the whole day wasted. But that's what happened. Anyway, it's your wish whether you want to read or you want to waste time on a sport like cricket. Whole day, ये 1 घंटे का नहीं है, या हॉकी 1 घंटे में खत्म हो जाता है सभा में, फुटबॉल 2 घंटे में खत्म हो जाता है, बास्केटबॉल 1 घंटे में खत्म होता है, वॉलीबॉल 1 घंटे, बैडमिंटन का मैच आधे घंटे में खत्म हो जाता है. सो वन डे, दैट्स वाई इज कॉल्ड वन डे इंटरनेशनल. और पहले आपने वो फ्लाई पास्ट वगैरह देखा होगा और डांस डूंस देखा होगा, तो 12 साढ़े 12 इफ़ यू स्टार्टेड, आई कैन इमेजिन इट एंडेड, एंड देन मूड भी नहीं होता है, हारने के बाद बड़ा बुरा भी लगता है, हमें बुरा लग रहा था. राजेंद्र बिश्नोई, सत्यम, डेमन, लुसिफर, प्रणव, सरताज, सुक्रान, डेमन, लुसिफर, यू मस्ट राइट योर नेम. जैसे मुझे बाकियों के नाम याद हो गए, नाम लिखो. संदीप, परमहंस, रौनक, अजित कृष्णन, हंसी कुमार. एजुकेशन इज द पासपोर्ट फॉर बाउंडलेस सक्सेस. थैंक यू वैष्णवी, यश वाघ, विक्की, आकांक्षा, बसंत, अक्षय, हितेश, आशीष, निर्वाण, मनीष महतो, देन हर्ष, सुदेश, शिवम, गुड मॉर्निंग सर, शिवम पांडे, चंद्रकांत, जका, गुड टू सी यू. Good morning, Ram Ram, Jai Hind, Vasu, Raj Tiwari. Actually, we are here to learn what should be the mindset of Fauji. Thanks a lot, Saab ji, for amazing session. Thank you very much. फौजी का नहीं, जो मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, ये हर नौजवान का माइंडसेट होना चाहिए. फौजी बाद की बात है, फौजी एक सब कैटेगरी है, बट दिस इज द माइंडसेट ऑफ एवरी यंग इंडियन बॉय और गर्ल, जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ. दैट इज वाई आई एम ऑन यूट्यूब ट्राइंग टू टेल यू ऑल दैट जिंदगी जीने का तरीका क्या है और किस टाइप के भारतीय हमें चाहिए, किस टाइप की आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए. या इंडिया लॉस द वर्ल्ड कप, सैड मोमेंट, कोई बात नहीं. शुभम पांडे, वर्ल्ड कप को करेंगे एनालाइज, डोंट वरी. हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर SSB फ्रॉम 10th. पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जय हिंद सर, यू आर द मोस्ट अवेटेड पर्सन इन दिस टाइमिंग. थैंक यू सुदेश. Abhishek Kumar, good morning from Knowledge Warrior, fighting with unawareness inside me. Yesterday I slept, read and enjoyed Chhat Puja but didn't watch cricket. Excellent, excellent. Ronak Ruhal, sir, you really help us for being giving our best. This is all that you made us to improve ourselves. Thank you, Ronak. Pranjal Dubey, Shivam Pandey. हाँ, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो. देखो, रिचुअल्स की थोड़ी अहमियत है, जबकि मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं तो बहुत इन चीज़ों से दूर रहा हूँ. सारी उम्र मिलिट्री स्कूल में रहे, फिर फौज में आ गए, हमें पता ही नहीं था क्या फेस्टिवल चल रहा है. बड़े बड़े फेस्टिवल पता थे, छोटे मोटे का कोई परवाह नहीं होती थी. रिचुअल्स क्या फैमिली को बाइंड करती हैं. तो आधा घंटा 15 मिनट आप फैमिली के साथ बैठे हो, आपने दिवाली की पूजा करी है, आपने कोई सरस्वती की पूजा करी है, आपने छठ पूजा करी है, ओणम, पोंगल वगैरह, ये फैमिली को बाइंड करते हैं. So I'm not against this. You must do activities with family, but it cannot be full day. It cannot be full day. Half an hour बैठ गए आप, चलो हवन करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है. हवन करना बहुत अच्छा है. नए घर में गए, कोई नया मेहमान घर में आया है, किसी की याद में करना है. These are very good things. मैगजीन आ जाएगी. नवनीत कौर, अशोक, जस्टिन जॉनसन, गौरी, शताक्षी उपाध्याय, कई दिनों बाद ये नाम सुना है मैंने, शताक्षी. या 5.9 करोड़ डिस्नी हॉटस्टार, देख लो आ गया ना. गौतम यादव, या पढ़े लिखे बच्चे मेरे पास. ओके शिवम, ऑल द बेस्ट. हितेश, शिवाजी, प्रिंस सोनी, इसमें बहुत से बच्चे तो मेरे BOCC कोर्स कर रहे हैं. या डिफेंस इज नॉट ओनली फॉर सिक्योरिटी, इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. चलो ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. So we will start with Indian Express. Head breaks hearts. The way head played. हमारा देखो, if I analyze the match, we didn't show fighting spirit at all. I don't know if I name the players. KL Rahul, he's an opener. See how he was playing in IPL and other places. He's a great batsman. 60 runs he made, but 100 plus ball. 40-50 बॉल आपने ODI में, 40-50 बॉल में कितने ओवर मेडन निकल गए आप सोच लो. क्रिमिनल. सूर्य कुमार यादव, ही इज बीन अ पैसेंजर इन दिस टीम. He may have done some amazing innings in T20, but he came. I was about to tweet now. SKY,
ये चांस है तेरी लाइफ बनाने का. एंड आई थॉट द वे ही वॉज वार्मिंग अप, कई बार मैंने देखा उसको वहाँ ना लगा हुआ था कुछ, मैंने कहा यार ये आज ना फोड़ेगा. आज मुझे लगा ये जल्दी आना चाहिए, इसको जडेजा से पहले आना चाहिए था. जडेजा अगेन नो फायर एट ऑल, हिज वाइफ वॉज देयर इन द स्टैंड, एवरीबडी वॉचिंग, प्राइम मिनिस्टर 2-4 मार रहे थे छक्के. अगर आउट ही होना है एटलीस्ट शो सम फाइट. नो फाइट एट ऑल. सूर्य कुमार यादव बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस टीम. सो देयर वाज नो फायर. सो फिर कहाँ से रन बनेंगे? इवन इन द एंड ओवर्स आई वाज वेटिंग कि यार कोई मारेगा. जस्ट डिडंट हैपन. कुलदीप यादव कैन स्कोर रन्स. Shami and Siraj and all, they tried Bumrah, but don't expect anything from the last 4. They're bowlers. So we didn't show any fight. So I was telling my wife, she was again saying, "No, we will win, we'll win." I put a question mark when we scored. She said, "यार run." मैंने कहा we should have scored about 290 or 300 was a par score here. You were short by 60 runs. तो कहाँ से? So we were out of the match. We did fight back by getting those 3 early wickets. लगा मुझे कि ये जो है भी the way Shami and Bumrah were on fire. But after that it just फिर body language झलक गई, फिर intent झलक गया, फिर it was visible कि match is gone. ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से analysis of this match. ठीक है, we came so close. We have won only twice World Cup, 1983 and 2011. Australia has won it 6 times. ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है, 6 बार. तो ऑस्ट्रेलिया और हर गेम में है. उनकी हॉकी देख लो, उनकी एथलेटिक्स देख लो, ठीक है, उनकी स्विमिंग देख लो. एंड अ मच स्मॉलर कंट्री देन अस इन पॉपुलेशन. तो इट इज ओवर. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज क्राउड बिहेवियर. इवन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेव द कप, द स्टेडियम हैड लेफ्ट. लोग निकल चुके थे, कोई नहीं वेट कर रहा था. इंडियन टीम ऑल्सो वॉकड आउट as soon as the cup was handed. We didn't even show. So somewhere in this entire World Cup, one thing is emerging is this hyper nationalism, this zingoism, this chanting that we are doing in stadium. जो true cricket lovers थे, I've seen matches in Bangalore, Chennai, Calcutta, Bombay, Delhi थोड़ा बहुत, but Bombay, Chennai, Calcutta, Bangalore. These are the places where true cricket lovers come for the match. They'll appreciate. Nobody appreciated when Head made a century. This is the only century in the finals. Crowd was silent. Haram. We should all stood up and clapped. Isn't it? It's a match finally, damn it. And we are hosts. हमने घर पे बुलाया भाई. हमने घर पे बुलाया, ये क्यों भूलते हो? And we organized a great tournament. So we can take pride कि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट. बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा. वी शोकेस्ड आवर कंट्री. दे ट्रैवल्ड अक्रॉस कंट्री. वो इंप्रेशन लेके गए होंगे. बट क्राउड वेरी पुअर. सो मे बी दिस द न्यू क्रिकेट लवर्स जो वो कहते हैं सर इफ यू डोंट सपोर्ट हु विल सपोर्ट टाइप्स आर द वंस हु आर वाचिंग क्रिकेट. दे डोंट अंडरस्टैंड द स्पोर्ट्स एंड दे लैक स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, समझ गए बात मेरी? So give me a thumbs up who agree with me that we need to appreciate. I've seen matches where even India playing Pakistan, and a good 4 or a 6, the crowd gets up and claps. Yeah, well done. That is why the crowd is there. The crowd is there to enjoy the sports. We do hoot for our team, वो तो होना ही चाहिए. But that doesn't mean कि you don't appreciate what the other team is doing. चलो, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको, क्रिकेट की बातें. I always say it's big waste of time. We move to serious issues. This is Indian Express investigation part 1. Fraud loan apps run amok as government RBI tech platform silent on who's the monitor. ये बड़ी दुख की बात है. And this is a investigation by Indian Express, and this is part 1. So more of this is going to come. I believe there are apps. There are apps on Play Store, on Telegram, on Instagram, where they're offering you loan. आती रहती है मैसेज. हम तो खैर I never click anything, never ever click anything कि ये लोन ले लो सस्ता. But lot of people after that they hound them. The interest rates are so high, and they just get after these people. And this is a big scam. This is a big scam that is taking place under our eyes. So what is the Reserve Bank of India doing? What is the government doing? What is the tech platform जिनके ऊपर ये लॉन्च हो रखी है एप्स?
ये डार्क वेब की बात नहीं कर, दिस इज ओपन वेब. So this is very serious that illegal loan apps trap people. Illegal loan और कौन trap होता है इसमें? Unknowing people, middle class, lower middle class, they are getting trapped in loan apps which are available on our smartphones. So please stay away. Educate your parents, your brothers, sisters, hard earned money. Please don't click something and expect कि वो आपको लोन दे देंगे. अगेन मुद्दा क्यों लोन क्यों चाहिए? बिकॉज आर बैंक्स विल नॉट गिव यू लोन. आर बैंकिंग सिस्टम, ये आई कवर्ड दिस 2-3 days बैक दैट वी डोंट गिव क्रेडिट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल. चलो, we come to pollution. This is Curbs East, but no construction demolition work allowed for now. This is Delhi. Delhi has AQI of about yesterday 301. Gurgaon was better. Noida, Faridabad was 327 and Ghaziabad 280. So this is very poor. हम सीवियर से वेरी पुअर में आ गए. हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हम वेरी पुअर में आ गए. सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. Otherwise, all this zingoism, rhetoric, Mera India, मैं भारत और ये मंडपम and G20, all, if you can't give clean air to our people, I think we really have to, something is wrong with us. All agencies, all, whether it's Delhi government, central government, other agencies, people involved, we have to really think of this. Whether it is just stubble burning or it is other measures or it is vehicles. Can we have intelligent transport system? Vehicles keep standing on red light and they're on because we don't know कितनी देर में खुलेगा रास्ता. And bumper to bumper traffic, whether it's metros, so really we have to find an answer. Otherwise, this is affecting our economy. By the way, कहीं आप सोच रहे हो सर तो ऐसे बोल, this is affecting our economy, your earnings, your job prospectus. Because कौन आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? If this is the situation, if we see this year after year, so this is, and most of North India has poor air. Most of North India, North means I mean at least if you draw a radius of about 500 kilometers or 800 kilometers around Delhi, the air is very, very bad, unbreathable. Again, like all other opposition states, here also in Delhi there are serious issues between there is no governor, but it's a lieutenant governor and the elected government. आगे I will discuss with you what is happening in Tamil Nadu and Kerala as far as the role of governors is concerned. पंजाब हम कवर कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मानने के बाद फिर गवर्नर ने साइन किया कि हाँ वो बजट सेशन लीगल था. अदरवाइज से नो, आई विल नॉट साइन. मैंने मना किया था, यू विल नॉट हैव अ सेशन. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इसके ऊपर आज आर्टिकल भी है, रोल ऑफ गवर्नर्स पे आगे मैं बात करूँगा इस पर. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू द editorial. This is the best part of the newspaper, editorial and explain. Even if you can get this, and I will share some of these, but first we go on shining a light. This is on Cyprus Confidential. And I cover these issues because in a group discussion or when there's WhatsApp uncle aunties come, these are the issues young people should raise. These are the issues. Sir, why do there's so much of fraud in our country? वो व्हाट्सएप वाले हैरान, व्हाट फ्रॉड? वो सर पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, पेगासस, नाउ साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, हाइडनबर्ग रिपोर्ट, सहारा इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज. सो दैट मीन्स these people cannot survive if there's no patronage. So this is Cyprus Confidential, where more than 200 journalists from across the world, 270 journalists have investigated 60 media houses, and 55 countries में this investigation. 3.6 million documents have been seen by these people, 270 journalists. So in this, the Indian angle is that there are a lot of Indians who have taken a golden passport. तो साइप्रस में सिस्टम क्या था कि if you deposit $2 million, 2 million euros, ये तो यूरोपियन कंट्री, 2 million euros you deposit, you get a golden passport. पैसे जमा करो और पासपोर्ट ले लो हाथों हाथ. And total anonymity. Nobody can ask them कि ये
2 मिलियन कहाँ से आए भाई? वेयर डिड यू अर्न इट? कोई शॉप थी आपकी, कोई बिजनेस था, घर बेचा है आपने, कोई प्रॉपर्टी बेची? नो 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 क्वेश्चंस आस्क्ड, नो ड्यूटीज, नो टैक्सेस. So many Indians are also there in this list. That means people are finding loopholes to park their money to avoid taxes. तो इसमें हमारा लॉस है. ये सब एंटी नेशनल, एक्चुअली ये ज़्यादा एंटी नेशनल है. एक्चुअल एंटी नेशनल्स ये हैं who would avoid paying taxes here in India and carry the money. तो ये है साइप्रस. इससे पहले we have covered this ऑफशोर लीक्स हुए थे 2013, HSBC स्विस लीक्स 2015, पनामा पेपर्स 2016, पैराडाइज पेपर्स 2017 एंड पेंडोरा पेपर्स 2021. So this is continuing and it is increasing. It is increasing. The black money, Indians own black money abroad has increased. It has not reduced. Now we move to the next one, drug detox. This is very sad that the India is one of the largest manufacturer of drugs, medicines, but our medicines have come in for have been criticized or have been caught for spurious. मतलब हम बहुत मिक्स करके दवाइयों में उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है. Many WHO, World Health Organization, has flagged this issue. Many countries where Indian cough syrups are exported, children have died. So in recent years, adverse reports on Indian generics have led to questions being asked by the regulatory process governing the pharma sector. Do we have a regulatory process? Who is regulating our pharma industry? At least 7 Indian made cough syrup, 7 Indian made cough syrups have been flagged as substandard by WHO. कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे लिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आपके 7 कफ सिरप तो सब स्टैंडर्ड है. द कंट्रीज पॉलिसी, US FDA has also, federal US का FDA, they have also raised concerns about Indian manufacturers. The country's policy making has been slow to respond to these charges. We have not been able to respond. It has either resorted to piecemeal solutions or denied allegations of regulatory failure. In August, the government belatedly directed medicine manufacturers to follow WHO standards. It has now followed up this move by setting up a team to develop a portal that will enable tracking of drug making process. Medicine manufacturers will be required to feed in details of raw materials and distributors will need to upload their invoices on this platform. The site will also contain, तो ये बनाते हैं हम, बट फिर वही कोई इंस्पेक्टर आज कोई ब्राइब यहाँ से कुछ कर के we will, but this is drug detox. It's an important issue which you all should know, that why we are not sure when we go to a medical store. When we go to a medical store, we are not sure that the medicine we are buying for ourselves, for our parents or anybody sick is genuine or not. We are not sure. Itni hame, we have no faith. A common person has no faith in what is he or she is buying. Is it correct or not for the money? Huge money is there in this business of pharma business. Huge money. That is why वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं डॉक्टर्स को बड़े अच्छे गिफ्ट देते हैं. एंड वेन एवर डॉक्टर्स का, कहीं कार्डियोलॉजिस्ट का हो रहा है, कहीं ऑन्कोलॉजिस्ट का हो रहा है, कहीं किसी का हो रहा है, जब इनके मीटिंग्स होते हैं 5-star होटल एंड लैविश, हु पेज फॉर ऑल दिस? फार्मा कंपनीज. हु पेज फॉर ऑल दिस? फार्मा कंपनी. पीछे का आया था डॉक्टर ने 600 स्टंट लगा दिए जिनको जरूरत ही नहीं थी. नकली लगा दिए, सब स्टैंडर्ड लगा दिए और नकली लगा दिए पैसा बनाने के लिए. सो दिस इज समवेयर, this also speaks about our character. So ये हैं असली एंटी नेशनल, not those who question the government or question policy. These are the people, those who park their money and those who are doing adulteration in such an important thing, that is the pharma sector. तो ये pharma sector पे था. Now there's an article on stubble burning पे, lot of articles, lot of solutions you hear, but there's nothing which has come which is so concrete. So this is, again I repeat, this is paddy, because when the machine cuts, itna bach jata hai usme niche. That is not even good for your cattle feed. It's not a good cattle feed, and it cannot be left there because not allow the next crop to, you don't get a good crop. So what does the farmer do? So that is why this burning कई जगह होती है, but northwest India में, Punjab, Haryana, it affects the NCR region because this is the way the winds are blowing in this season. That is the reason
winds are blowing in this season. So this entire thing comes here. So this two writers, Ramesh Chand and Shweta Sani, they are with Niti Aayog and with Arcus Policy Research, New Delhi. So they are saying that paddy straw has high silica content and is not preferred as animal feed. If plowed back into the field, it interferes with the subsequent crop operations. Only some farmers use farm machines like happy seeder and straw management machines to incorporate the stubble back into the soil instead of setting it on fire. So this requires massive policy initiatives. It requires training, it requires motivation, it requires education of the farmers involved. ठीक है. This is of course bearing witness in Gaza. Gaza पे आगे भी बात करूँगा आपके साथ. Yesterday I have recorded a podcast with an Israeli very senior geostrategic expert, journalist, and also an ex-officer of Israel Defense Forces. So his point of view you will hear in few days when I will upload it, is that they will not leave until they exterminate the Hamas totally. And they are okay with he says these are very less casualties, 12,000, even if they are true. Firstly, any figure that comes out of Hamas has to be questioned, and rightly so. Any figure coming out of Israel also has to be questioned, and rightly so. Okay. So now we come to the missing women in polls. अभी कुछ दिन पहले 33% पास हुआ, सब ने हाँ जी कर दो required. And I was telling you this, the test will be in the elections, 5 state assembly elections. Let us see who will field how many women. So again, very few women are being fielded by the BJP and the Congress in the two major parties, one ruling, one opposition. So Congress has fielded 28 women candidates, which comprise 14%, which is very low. BJP has only fielded 20, which is 10%. तो उन्होंने 10% फील्ड किया, उन्होंने 14%, रिजर्वेशन 33% का. तो कहाँ से आएंगे? So that means that is what we were discussing that time, that if we want women to come in politics, in decision making, then the initiative has to be from the parties, from panchayat election onwards. How many parties are encouraging women cadre to women to how many parties are giving tickets to women? So it is between 10 and 14%. Some parties may be even less, some parties may even be less. So ये है. Rajnath Jaishankar to meet Australian counterpart for 2+2 talks. So yesterday, the Deputy Prime Minister was there. He flown to Ahmedabad with the Prime Minister to give the trophy. But the Defence Minister and External Affairs Minister are in Delhi. And now they will talk from position of strength क्योंकि कल ही कप लिफ्ट किया उन्होंने. तो कल ही उन्होंने 6th time they won the World Cup. So today, these talks will take place between Rajnath and Jaishankar on one side and Richard Marles and Penny Wong on the other side. So let us see. Okay. Supreme Court to hear Tamil Nadu, Kerala pleas today on delay by governors to clear bills. ये नहीं मानते. Supreme Court is scheduled to hear on Monday 2 separate pleas by the Tamil Nadu government and Kerala government alleging a delay in the respective state government. Imagine if there is no Supreme Court. या Supreme Court बोले I have no time, अगले साल सुनूंगा तुम्हारी. डेट दे दो इनको जनवरी की और फिर डेट दे देना जून की. फिर क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट? What are the options? The constitution doesn't give any options. ठीक है. So this is 10 bills by Tamil Nadu Assembly, and then there are Kerala has many issues. Kerala also has many issues with their governor. He is not passing certain bills there also. So ये हमारा role of governors. Navy playing a key role in free Indo-Pacific. Admiral Kumar, he is in the news these days because of the talks in various seminars. So this was probably a talk in a conclave held the Synergia Foundation, a think tank on National Security Advisory Board here. So there's no doubt, I've always been saying that Indian Navies play a big role.
and blue water navies play a bigger role. Okay, so all the trade takes place, much of the world trade takes place on the seas. So we must concentrate on strengthening our navy, and that is the way to go in future. Okay, we come to Gaza. Gaza hospital death zone. WHO, that's what WHO says. Troops close in on refugee camp. So this is the biggest hospital, Shifa Hospital in Gaza. I'm sorry, the light has gone, but the net will work. So we will continue our session. So Shifa Hospital in Rafah, in West Bank, that is where there are a lot of premature babies, and now challenge is to keep these babies alive. Challenge is to keep. Many babies have died, and there is a health pandemic, and some babies are being flown to other countries. Let us see if this is possible. Then Houthis hijack cargo ship linked to Israel, 25 crew taken hostage. Challenges to Hamas hostage deal very minor, says Qatar Prime Minister. So this hostage issue between Qatar on maybe mediating between Israel and Hamas. People are hopeful that sooner or later they will be released, but when it will be released, how they'll be released, because there are about 230 of them, and they are from different nations. They are all not Israelis. They are from different nations. Okay. So this is Ukraine. Middle East has taken away our attention from the Russia-Ukraine war, but that is also going as violence as possible. So Kyiv is being attacked repeatedly. Second straight day, Kyiv is the capital, has been attacked by Russia. Trump likely to come back as president, I don't know. This is what the Israeli intellectual told me yesterday. They are hopeful that 100% Trump will come, and when Trump comes, Trump has his own ideology. He is towards the far right. So you will see a lot of changes, which Biden tried to improve. So when if he comes back, let's wait and watch. Pakistani judge removed after warning defense secretary. So in Pakistan, you cannot criticize an army general, even if retired. The defense secretary is a retired army general. तो किसी छोटे कोर्ट ने उसको कोई warning दे दिया, and the judge has been immediately removed. Anyway, minor news. Now we come to this. Why the High Court struck down Haryana's private sector job quota? इस पे हम बात कर चुके हैं. This was for 30,000 and below jobs only. कितना? 30,000 and below jobs के लिए ये जॉब कोटा जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था, विच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट has struck it down. Now they are going to the Supreme Court. तो इसमें what is the law? Who challenged? किसने चैलेंज किया? ये फरीदाबाद एंड गुड़गांव ट्रेडर्स ने किया. What else did the Haryana law say? क्या था लॉ के अंदर? What did the High Court rule? What happens now? So it will go to Supreme Court. Then we have the other oil imports. This is by Harish Damodran. He's a regular writer. Over 60% of its consumption requirements being met through imports, which could rise further. India has reasons to worry about vegetable oils going the petroleum products way. तो ये बात हो रही है एडिबल ऑयल्स की, खाना बनाने का तेल. ठीक है. द अदर ऑयल, एक ऑयल तो है जो हमें गाड़ियों में चलाने के लिए चाहिए, है ना. दैट इज पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल, लुब्रिकेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर देयर. But here he is talking of Indian oil imports. Edible oil have risen almost 1.5 times, more than double in rupee value terms in last 10 years. तो पिछले 10 साल में हमारा जो edible oil का imports है, that is increased by 1.5 times. So this is also and with the Russia-Ukraine war going on, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी कॉस्ट इन्फ्लेशन में, एडिबल ऑयल. और एडिबल ऑयल हर एक को चाहिए तेल, खाना बनाने वाला तेल. सो इसकी भी कंडीशन जो है ये है, बिकॉज इफ द इम्पोर्ट्स वी आर वनरेबल टू इम्पोर्ट्स. कि कोई भी दुनिया में कोई ऐसी घटना हो जाएगी, इम्पोर्ट्स नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी. जो लोकली प्रोड्यूस्ड है वो फिर ज़्यादा पैसे लेगा. जैसे होटल इन अहमदाबाद वर एट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ अ नाइट. फ्लाइट्स वर एट 80,000, क्योंकि अब मौका मिला है
to encash on an emergency. So same thing happens. Why do prices go up? Because there is demand ज़्यादा है, supply कम है, prices चले जाएंगे. We still are not sure what age should we admit at in class 1. अभी तक क्या एज होनी चाहिए जो कि किस एज पे बच्चे को पहली क्लास में जाना चाहिए, ये आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है. हमारे टाइम से चल रहा है, ये हमारे टाइम से चल रहा है. पहले एलकेजी यूकेजी वगैरह होता नहीं था. हमारे टाइम पे सीधा पहली जमात में दाखिल करते थे. तो एज का क्या फैक्टर है? सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड दिस ईयर विल कंटिन्यू टू एडमिट स्टूडेंट्स टू क्लास 1 बिलो एज ऑफ 6 years. ठीक है. NEP says 5, 3, 3 plus 4. That means पहला बच्चा 5 साल में आए पहली क्लास में. So what is the issue? According to response furnished by in Lok Sabha, there are wide variations in age criteria among states when it comes to. तो अलग कोई 5 साल में एडमिट कर रहा है, कोई 6 साल में एडमिट कर रहा है. ये हम डिसाइड नहीं कर पाए. ईस्ट एशिया, मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज 6 years. मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन ईस्ट एशिया में 6 साल है. हमारे यहाँ कई स्टेट्स में 5 साल है. सो वी आर नॉट श्योर एट वॉट एज वी शुड आई थिंक लेट करो यार, मस्ती करने दो बच्चों को थोड़ी बहुत. उसके बाद तो लाइफ ख़राब होने वाली है जब बस्ता लग जाएगा ऊपर, है ना. सो आई थिंक 6 years शुड बी द आइडियल. I mark this, but Mercedes Audi C record sales in festive season as demand continues to grow. ये मुझे समझ नहीं आया, और ये नहीं मुझे समझ में आ गया, बट आई डोंट नो इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. वाई जो लग्जरी सेगमेंट है, लग्जरी घड़ियाँ हैं, परफ्यूम हैं, बैग हैं, गाड़ियाँ हैं, लग्जरी बाइक्स हैं, इनकी क्यों नहीं मार्केट डाउन होती कभी इंडिया में? इंडिया की बात कर रहा हूँ. सो मर्सिडीज ऑडी जो 50 लाख 1 करोड़, मेरे यहाँ एक गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, तो बहुत अच्छी लग रही थी. तो मेरी वाइफ ने कहा यार ये बहुत महंगी गाड़ी. मैंने कहा नहीं यार 30-40 लाख की होगी. हमने वहीं उसका नाम लेके गूगल किया. इट वॉज 1.29 crore स्टैंडिंग है. 1.29 करोड़ की कार और 5 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं. सो इंडियंस आर बाइंग. दैट मीन्स द रिच आर गेटिंग रिचर. The luxury segment in the flats is unimaginable. In Gurgaon, there are areas where flats are for 35 crores, 40 crores. Bombay, same thing. Bangalore also must be the same. So high-end, purchases, उसमें कोई कमी नहीं. It sells like hotcakes. 50 करोड़ के 40 करोड़ के फ्लैट जो है लॉन्च में बिक जाते हैं. So this disparity, there's a wide disparity between the rich are getting richer, poor improving, but I don't know if they're improving at the same pace. This is all Coldplay. It was all yellow, and I felt very sorry for Rohit. I think he was an excellent captain. I felt sorry for him. He was heartbroken, and he played an amazing tournament as a captain and as well as a player. Workers complete a week of tunnel. Finally, can our media, if we have stopped cricket now, हो गया खत्म, अब बंद कर दो उसको बस्ते में. Can we think of this 41 people? Even now, yesterday when the minister was there, he said it will take 2 to 3 days if the machines work properly. 2 to 3 days if the machines work properly. So now they're looking at 5 different options from top, from side to reach out to. Oh, today this is Millennium City, and you can see the light the way it is going. So our prayers are with these people. 41 people, now 8 days, and the machine has been able to drill only about 22 meters inside. Tentative Gaza deal reached. This is the Hindu. To free hostages, pause fighting as per report. So hopefully, let us wait. Maybe today or tomorrow we will get information on release of hostages and some respite to people in Gaza. Let's see. But one thing is sure, that Gaza will be controlled now by Israel. They are not going to give it back to Palestinian Authority.
Gaza will be now directly administered by Israel. They cannot and will not accept Hamas coming back again the way they have done earlier. Now there's a very nice article here. This is Education Plus. I found it very interesting because this is a game of consent. Light कम है but मैं नज़दीक ले आता हूँ. This is really wonderful. This is Bhavya Venkatesh. She's written about about good touch, bad touch, age of consent, and many things related to sex education, which we are so shy. We all know it should be there for adolescents. घर में बात करते नहीं हैं. And whatever information young adolescents, especially in the age group of 14 to 17, is all from either internet or from their senior friends. So this is a game that somebody has designed. It's a amazing game where, and imagine yesterday was World Day for Prevention of Child Abuse, November 19. It was World Day for Prevention of Child Abuse, when the spotlight is placed on trauma of child sexual abuse and the action that can be taken to prevent. So ये भी चीज़ मैं मानता हूँ, इसको भी अगर we need a solid education on good touch, bad touch, and this is a game somebody has devised. If you play this game, you will learn automatically. So I'll try and send you this article. ये भी इशू कई बार ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में या कहीं ना कहीं आता है कि हाउ शुड इट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट our young people on this very important aspect, but somehow it is a closed chapter. We don't like to discuss this now. Yeah, this is the editorial I was waiting for you. Partisan mischief. तो क्या है mischief है? Partisan mischief. This is governors rejecting bills without cause undermines parliamentary democracy. So hard-hitting article. It starts with Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's act of withholding assent to bills concerning universities in the state is nothing but constitutional tyranny. Language देखो, ये क्या है? Constitutional tyranny. उसको power दे दिया, उसने ना election लड़ना, ना कोई है. He has just been appointed. कोई qualification है या नहीं हमें पता नहीं to be a governor of a state. So this is constitutional tyranny. It is gross abuse of power granted by the constitution to give or refuse assent to bills passed by the legislature. The grant of assent is a routine function of the titular head of state, and the exceptional power to withhold it is not meant to be exercised unreasonably. Rather, incumbents in Raj Bhavan ought to use this veto rarely. बहुत रेयर होना चाहिए, बहुत रेयर. गवर्नर अगर समझता भी ये गलत है, I must withhold it or talk. Call the chief minister, give him a call him for a cup of tea. बात करो सभी, क्या बात है? If you are so concerned. So this is really. The bills for which Mr. Ravi has refused approval seek mainly to take away governor's power to appoint vice chancellors. अब गवर्नर जो है, he or she, if he comes with an agenda, वो उसी टाइप के लोगों को वाइस चांसलर लगाना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी वालों को, so that they can influence the education curriculum and things like this. Is a very dangerous thing to happen. So the government has taken a decision. Tamil Nadu पहले गवर्नर की West Bengal, that now no longer, if the governor is not is not listening to council of ministers, then why should we allow him to have this authority? हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है, हम पे करते हैं, सरकार पे करती है उनकी स्टेट की, गवर्नर क्यों अपॉइंट करेगा? So there is logic in this. So this is about the role of governors. Then of course you have on the रोड सेफ्टी इन इंडिया. रोड सेफ्टी, इसको मैं बहुत कवर करता हूँ और कोई नहीं कवर करेगा इस इशू को. रोड सेफ्टी, आई टोल्ड यू दैट इंडियन रोड्स लास्ट ईयर an estimated 3 lakh people lost their lives on Indian roads. 3 lakh people died on Indian roads. That is equivalent to more than 34 people every hour, every day. Let this sink in. 34 लोग हर घंटे, हर रोज भारत के सड़कों पर मर जाते हैं एक्सीडेंट्स में. ये क्या है बात? ये मुद्दा हम इसको कभी टच नहीं करते. ना इलेक्शन इशू है ये, जैसे पोल्यूशन नॉट एन इलेक्शन. कोई रैली में बात की किसी ने कि मैं पोल्यूशन कम कर दूंगा, मैं साफ पानी दूंगा आपको? ना.
हैं, साफ हवा देंगे आपके बच्चों को? नहीं. Same is with this road accident. So this is a very nice study which says that we need better road safety, we need better technology, we need private partnership and education to end this, because losing 3 lakh people, and these are all young people, they're all young people, they're all in the age group of 18 to 34 जो गाड़ियाँ चला रहे हैं. So they dying at a time when they ought to be involved in economic activity. They have their families. तो ये जो है steering road safety India back onto the right lane. तो ये बहुत जरूरी है. And this will increase because the way we are investing, and rightly so, the roads, railways, airports, seaports, ये बनेंगे तो देश आगे जाएगा. तो इस पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो उस पे उतने ही एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. देन वी हैव एन आर्टिकल फ्रॉम उड़ीसा, making public education inclusive. Why I am covering this, though he is a minister in Odisha, he is a parliamentarian from Odisha, he is talking of his state, but this is a very important issue. What has happened to our government schools? Why nobody trusts? Even जो स्कूल में टीचर लगे हुए हैं, कपल्स भी टीचर अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं लेके आते. दे सेंड देम टू प्राइवेट स्कूल. एंड प्राइवेट स्कूल में टीचर आर लेस एजुकेटेड, लेस पेड, poor facilities. Even then we have more faith in the private education than the government education. So isko leke I believe Odisha government has launched a revolutionary reform, Odisha Adarsh Vidyalayas, which will be better infrastructure, something like I think Navodaya Vidyalaya या सैनिक स्कूल उस टाइप से बना रहे हैं ये schools. And if we all know that English is so important, प्राइवेट स्कूल में पहली से बच्चा पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में हम कहते नहीं. So this is making public education inclusive. I have been telling you that हम विश्व गुरु बनेंगे, पता नहीं कब बनेंगे, अगर बनेंगे उस दिन बनेंगे जिस दिन गांव का प्राइमरी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेंगे और बढ़िया हो जाएगा. गांव का प्राइमरी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ठीक है, नॉट यूनिवर्सिटीज. JNU, DU, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, IIT से नहीं बनेंगे. हम बनेंगे जिस दिन प्राइमरी स्कूल, गांव का प्राइमरी स्कूल जो है ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि गांव वाले अपने बच्चों को ही भेजे ही ना और अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए. उस दिन दैट डे विल बी रेवोल्यूशन. देन एजुकेशन, देन इट टेक 10 years 20 years आफ्टर, क्योंकि ये बच्चे प्राइमरी से हाई स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी, फिर चेंज होएगा. आया ना मज़ा? हैं, आया हो मज़ा तो थम्स अप दे दो. ये बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी. द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर, we have covered it and I have been covering it again and again कि probably an amendment requires in our constitution where this role of governor can be toned down, and the state, if he doesn't pass in 5 days 7 days, it should be assumed कि हो गया भाई, हो गया, governor का assent आ गया. That should be the way in which we should be looking at this. वर्ड ऑफ द डे, नो योर इंग्लिश. बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लिश पे. ये छठ पूजा इतना बढ़िया त्यौहार है. और ये देखो, ये वाइट जो नज़र आ रहा है, लाइट कम है, दिस इज़ फोम. यमुना में हज़ारों घाट बनाए गए हैं यमुना के अंदर. एंड ये सूर्य को अर्घ दे रहे हैं शाम को, इवनिंग में. एंड फुल ऑफ पॉइजन, दे आर स्टैंडिंग इन पॉइजनस वाटर. Then of course we have a talk by Air Chief, stresses need to invest in new technologies. Absolutely right. We need more and more cutting edge technology. And Supreme Court will hear the petitions today of Tamil Nadu and Kerala government. Then of course election news, election and cricket, both best avoided. We'll wait for the result. Okay. This is Gaza. Health workers evacuate 31 very sick babies from Gaza hospital. Then we have news from Pakistan, where Nawaz Sharif likely to be Prime Minister for the 4th time in next elections. Bangladesh.
बांग्लादेश इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वहाँ पर भी द सीन इज politically very very sensitive, and again the Supreme Court of Bangladesh has banned the right wing party from taking part in election. तो उनकी जो राइट विंग पार्टी है जमायत इस्लामी, they were banned in 2013 by High Court, and then they were also banned in 2014 and 2018 continuously to take part in elections. And again, yesterday the Chief Justice has dismissed, Obedul Hassan has dismissed the petition of Jamaat Islami कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते. You know why? Because as per the secular constitution of Bangladesh, your party is not secular. कमाल की बात है, देख लो, ये मुस्लिम कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सेकुलर बनाया है, एंड दे आर नॉट अलाउइंग ए रिलीजियस पार्टी टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस बिकॉज दे फील यू आर नॉट सेकुलर इनफ. ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक इशू होना चाहिए, यंग जनरेशन को समझना चाहिए. डू वी नीड रिलीजन इन पॉलिटिक्स और वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म? सो दिस इज न्यूज फ्रॉम बांग्लादेश. Then you have cricket, leave it. And of course, I have Times of India here with me, but nothing much. Most of it we have covered. Only thing is that we have a record of 4.6 lakh flyers on World Cup Eve, set record after lean Diwali. तो एक दिन में 4.5 लाख इंडियंस ने फ्लाइट ली. That is a record. That is a record of single day of people flying. So good for our aviation sector. मैं तो कहता हूँ खूब फ्लाइट्स होनी चाहिए, खूब ट्रेन. जो देखो आपने ट्रेन्स में क्या हालत है. तो वंदे भारत की जगह पहले हमें अपनी पैसेंजर ट्रेन्स में फैसिलिटीज इंप्रूव करनी चाहिए, सो दैट कॉमन पर्सन, वी मस्ट टेक ऑलवेज, वेन एवर वी मेक पॉलिसीज, थिंक ऑफ द कॉमन पुअर मैन. चलो, नाउ आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. Guddu Kumar Thakur, so whenever I listen to you, I get energetic and positive. Road accidents are very high. Imagine when I was 6 years old, I lost my father in road accident. Gauri का वो है. ये अशित पनवर गुज्जर, ब्रिटिश की स्पेलिंग ही नहीं आपको आती है, आप कह रहे हो वो हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय करके चले गए. प्लीज ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलो बाहर कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड आवर ऑल वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चर है. तो अब तो मौका है तुम्हारे पास, 75 साल हो गए उनको गए हुए. दिस टेंडेंसी टू गो बैक इन सम prehistoric time is also it will not do any good. Thank you, Ram Sarup. 5 sectors India need to work on: education, health, defense, environment, and sustainable development. Yeah, Rishabh Avasthi, good. Sir, is it white shirt or secret of fountain of your youth? Because you are wearing both quite well. Thank you, Vaishnavi. There's not really, yeah, it's white with a lot of some flowers on it. Mayank Mittal, sir, I've started giving education to poor kids at primary level, as you said, for making a revolutionary change. I am on the way to make it possible and following. Thank you, Mayank. Thank you so much. Yes, Manas, every day. He's asking, do you shave every day? I said yes. फौज की आदत पड़ी है. How does my daily routine go? Busy routine. And I also relax. ऐसी बात नहीं है. बड़ा राजू, sir, I read newspaper and just don't know how to write notes, and then I find myself wasting 2 to 3 hours making notes. देखो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है. ये हर रोज 2-3 घंटे मत वेस्ट करो. एंड नेक्स्ट AMA सेशन अगेन आई विल डिस्कस दिस विद यू. ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को. डू यू थिंक क्रिकेट रिप्रेजेंट कॉलोनियलिज्म? मैं इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं हूँ कि ये कॉलोनियलिज्म है, फलाना है. ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम कॉलोनियलिज्म हम कह रहे हैं, अभी नाम भी इंडिया से भारत कर दो है, बट क्रिकेट बैन कर दो क्रिकेट को. लेट्स क्लोज BCCI, दे व्हाट आई नो थाउजेंड्स करोड़ वो दे दो, बांट दो देश में, गरीबी हट जाएगी, एंड क्लोज दिस ऑफ. इज इट पॉसिबल? नो, it's not possible. Huge market for cricket in India, and started with 1983 World Cup. आई थी उससे पहले ये क्रिकेट प्लेयर्स को भी कोई पैसे नहीं मिलते थे. ठीक है, it started with Kapil Dev and he was not even invited yesterday.
एएमए सेशन भाई टेलीग्राम पे होता है, टेलीग्राम पे होता है एएमए सेशन। मैं टेलीग्राम पे तो बहुत बार मैं लाइव भी करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, एंड उसमें आप आओगे तो आपको आपको तो मैं फिर से टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। सो यू ज्वाइन दिस लिंक एंड देन यू विल नॉट मिस एनी एएमए सेशन, देन यू विल नॉट मिस। प्लस आई डू टेलीग्राम लाइव ऑल्सो। कल का मैच का बता चुका हूँ, विराट यादव माई एनालिसिस। सिर्फ 4 मंथ आपके चैनल से पढ़ने से इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा, बट इफ़ यू ज्वाइन BOCC इट विल बी वेरी गुड, विच इज स्टार्टिंग टुडे। BOCC 21 इसका इनॉग्रल एड्रेस शनिवार को था, कल हमने ग्रुप बना दिए हैं। वी हैव 2 बैचेस इन द इवनिंग। एक बैच लेट भी रखा हमने फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉर्पोरेट उनके लिए। सो स्टिल इफ यू हैव एनी दिस थिंग यू कैन ज्वाइन द BOCC कोर्स। नहीं, देयर इज नो फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब। All over world, the ranks are inspired by British European armies. I am also learned it from government school. Very good, Mukesh. Next BOAC batch 25th. Next BOAC batch 25th से start हो रहा है. Sir, today I asked my father that can I distribute newspaper on cycle daily morning. He said हमारी बेइज्जती होगी. ये हमारी प्रॉब्लम है. हम सोचते हैं काम छोटा काम है, इससे बेइज्जती होगी. ये बहुत गलत धारणा है, बहुत गलत धारणा है. यूरोप में मैंने, अमेरिका में बच्चे देखे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे हैं, घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ठीक है, वेटर का काम कर रहे हैं. बहुत से बच्चे इंटर्नशिप करते हैं रेस्टोरेंट्स में, वेटर का काम करते हैं. ये वहाँ कोई बेइज्जती नहीं मानता इस चीज़ को, काम को काम है. हाँ, ऋषभ अवस्थी, यू हैव वेस्टेड योर टाइम वॉचिंग इंडियन टीम, नाउ इट्स टू बैड. अब वो वक्त चला गया. So BOAC you can join. Next course is the best online SSB guidance course. Best, कोई और नहीं है इतना बढ़िया. A team of 5 assessors and जिन्होंने किया है BOAC आप उनसे पूछ लें लाइव. सो डोंट वेस्ट योर मनी. मुझे दुख होता है जब आप मेरे पास पेरेंट आते हैं जी वहाँ नागपुर भेज दिया है, दिल्ली में है, देहरादून है, पता नहीं कहाँ कहाँ, कितने पैसे खर्च के 25,000 फीस, 5-7 हज़ार और आना जाना करके 40,000 रुपये लग गए. और कॉन्फ्रेंस आउट, नो स्क्रीन आउट. मैंने कहा होना ही था स्क्रीन आउट, उसको बोलना ही नहीं आता है. क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? ऐसे बहुत आप लोग पैसे वेस्ट कर रहे हो ऑफलाइन में जाके. ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सब भेड़ चाल में जा रहे हैं, सब भेड़ चाल में जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं. सो एट 6,500 वेर यू गेट टू टॉक टू 5 ऑफिसर्स, मैं छठा हूँ, आई एम 6th वन. इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग कोर्स. सो आ जाओ, सो दैट यू नो कि आप कितने पानी में हो, सो दैट यू नो कि आप कितने पानी में हो. और जिसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, देर इज़ नो वे यू कैन क्लियर SSB. तो फिर क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? अगर आप बोल ही नहीं सकते इंग्लिश में, अगर आप लिख नहीं सकते, क्यों जाते हो यार? अगर NDA पास हो गया तो क्या हो गया? CDS पास हो गया तो क्या हो गया? कोई चमत्कार से नहीं बन सकते, ये मैं बता रहा हूँ. चमत्कार से SSB क्लियर नहीं होती है, लक से नहीं होती है. लक अच्छा था, नो. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देन गो फॉर SSB. ठीक है. सो हाउ मच, कितने आप पानी में हो, आपको क्या करना है, यू प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि मेरी पूरी टीम डेडिकेटेड टीम है, पूरी टीम डेडिकेटेड टीम है. ठीक है. सो इससे बेटर आपको कोई और ऑप्शन है नहीं. तो BOAC इज 6,500. सो इफ यू कैन वी क्लियर SSB विद नॉट गुड इंग्लिश? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. विराट यादव, हाँ, आप देवेश सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वहाँ बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे वेटर्स को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिक. अरे लाइट आ गई, चलो लाइट आ गई है. सो यू कैन सी मी ब्राइटर नाउ, वी हैव द लाइट. सो वी हैड, जबकि वी हैव जनरेटर्स, इवन देन देयर वाज पावर शट डाउन. सो वंस अगेन आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस. सो अगेन, yeah, most happening Telegram channel. Yes, thank you Zaka. Next BOAC batch 25th. ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ. टेलीग्राम चैनल मैंने शेयर कर लिया लिंक, आप प्लीज ज्वाइन कर लो. ठीक है. एंड जो उसमें नेगेटिव आता है,
एक दो बार मैं देखता हूँ बच्चा बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसको बैन नहीं कर देते हैं कि जाओ तुम कहीं और जाओ। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है आपको रिफॉर्म करने का, हम आपको रिफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ टाइम है पॉजिटिव एनर्जेटिक लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ठीक है। सो या माई टेन्योर ऑफ पीस कीपिंग एज अ कैप्टन किसी दिन बताऊंगा एएमए सेशन में, या फॉर प्लीज कॉल जो बीओसीसी कर रहे हैं और बीओएससी करना चाहते हो टीम को कॉल करो। वी ऑलवेज कंसिडर दिस, जो हमारा बच्चा है हमारा पुराना स्टूडेंट है, वी ऑलवेज कंसिडर दिस। लेट मी सी सम क्वेश्चन, को अच्छा क्वेश्चन हो तो पीछे। बहुत बहुत आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हुए हैं। सब ड्रीम 11 ऋषभ, सब ड्रीम 11 की जर्सी पहने बैठे, मतलब शर्म है हमारे पे, लानत है, लानत है हमारे पे कि टीम इंडिया की जगह टीम ड्रीम 11 लिखा हुआ है, ड्रीम 11 लिखा है इतना बड़ा बड़ा कि इस पे टीम बना लो, इस पे टीम बना लो। एंड ऐड देखिए आपने, गुटका, पान पराग एंड लिकर, ऑल क्रिकेट प्लेयर्स, दैट इज वाई मेरे लिए कोई हीरो नहीं है इनमें से, मेरे लिए कोई इनमें भारत रत्न या ये अवार्ड डिजर्व नहीं करता है। दे आर ऑल डूइंग इट फॉर मनी, जस्ट मनी, ओनली मनी एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? दिस इज अ टीम ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, डोंट गेट हिस्टेरिकल। कल कर सर अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे हमारी टीम को कौन करेगा? ठीक है कर लो सपोर्ट, बट टाइम मत वेस्ट करो। फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल आर्टिलरी, देर आर नॉट बैच ऑफ फीमेल आर्टिलरी, फर्स्ट टाइम फीमेल ऑफिसर्स हैव ज्वाइन आर्टिलरी, यस। लास्ट बैच में शॉर्ट सर्विस में आई थिंक थ्री और फोर women officers have joined artillery. No, everybody wants to be a government teacher, but they don't want their children to study in government school. Basant Kumar. State governments promote alcohol and tobacco in a big way. In Gurgaon, to every corner there's a huge tobacco, not tobacco, tobacco तो है ही, liquor malls. इतने बड़े बड़े मॉल दुनिया में कहीं नहीं है जो गुड़गांव में. Even the world doesn't have the kind of liquor shops you see in Gurgaon. Every square ओपन जो स्पेस है गवर्नमेंट की उसमें झुग्गी झोपड़ी हटा के बड़े बड़े लिकर के शॉप्स हैं, ओपन टिल 4 AM। कितने बजे तक? सुबह 4 बजे तक। सर गुरुकुल सिस्टम इज बेस्ट ऑलवेज, वो गया टाइम। अशित पनवर, अब गुरुकुल सिस्टम में नहीं जा सकते हैं, ये छोड़ दो, ये व्हाट्सएप की बात है, वो गया, वो जमाना गया। अब हम महाभारत दोबारा बना सकते हैं क्या? क्या रामायण का टाइम दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता, वो गया वो वक्त, वो गया वक्त। अब उसकी बात करना, अब आगे सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, हाउ विल यू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, वो सोचो, कि ना कि गुरुकुल सिस्टम में चले जाओ। वो था उसकी जरूरत उस टाइम पे। आई एम नॉट टू मच ऑफ फैन की पुरानी चीज़ों में, यू कांट गो बैक, वो वक्त जा चुका है, इट इज़ पास्ट, इट्स हिस्ट्री। विच बुक इज बेस्ट फॉर रीडिंग? एनी बुक, एनी बुक। तो ये यूएन पे किसी और दिन बात करूंगा ऋषभ, आई स्पीक टू यू एंड आई ऑल्सो स्पीक टू यू अबाउट माई एसोसिएशन विद पाकिस्तानी ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर आई विल डिस्कस नेक्स्ट एएमए में, मुझे रिमाइंड करना, आई हैव सर्व विद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, उस पर बात करेंगे। यूएन यूनाइटेड नेशंस पे बात करेंगे, वेयर आई वाज अ कैप्टन, वेरी वेरी रेयर, वी वर जस्ट 8 कैप्टन्स, वी वर 8 कैप्टन सेलेक्टेड फ्रॉम इंडियन आर्मी, 8। आप सोचो कितने कैप्टन होते हैं, ठीक है। सो वी वर वन ऑफ दोज who were selected through a proper process and we went for 1 year. चलो तो we will, so in the end once again BOAC starting 25th, BOCC starting today। अभी भी अगर इंग्लिश कमज़ोर है ले लो, ये कोर्स मैं बता रहा हूँ, आई कैन ओपन अप 4-5 स्लॉट्स फॉर यू। दिस कोर्स विल चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ, पर्सनैलिटी बना देगा आपका। सो आई लिव इट टू यू, ठीक है। एंड एएमए सेशन सैटरडे संडे को होता है, और कभी कभी मैं लाइव इस पे भी आता हूँ, टेलीग्राम पे भी आता हूँ।
जीतू सिंह, ये भी ऐसे ही है, ये भी एक जो है ना, ये जो आप बता रहे हो प्रोजेक्ट उद्धव, इसका कोई मतलब नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो जस्ट यू नो infructuous kind of project, nothing at all, nothing at all. Future wars will be fought with future technology and leadership, ठीक है। इस पे मैं कई बार कमेंट कर चुका, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स। मेजर गुड्डू, लीडरशिप क्वालिटी बुक से नहीं होगी, बुक से नहीं होगी, अपने आप को चेंज करने से होगी लीडरशिप क्वालिटीज। या कल नहीं था, परसों था, मैंने एएम में परसों लिया था वैष्णवी, यू वर देयर इन दैट एएम में। चलो, सो वंस अगेन रियली एंजॉयड द सेशन विद यू ऑल, बहुत मजा आया, लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड वेरी फ्री एंड फ्रैंक वी डिस्कस्ड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है। चलो, सो हैव अ ग्रेट डे, स्टे पॉजिटिव एंड हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, बच्चों में वही होना चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू।